Okay, again I will repeat what is meant by application. For example, these all apps. For example, we have taken an example of WhatsApp, right? Again, I will repeat WhatsApp application. Okay. So what is the use of WhatsApp application? To send a message or receive a message. Okay. So sending message, I have received some Blackboard messages. Okay. So I have received message from the WhatsApp group. So receiving is also one kind of user application. Okay. Again, I will send some thank you message. One of my student, for example, thank you message again. Yeah, good, very good message. Okay, I am sending very good message. Okay, so this sending is also called as a application. What I have sent? I have sent very good to that student. Okay, so very good. This message is sent to Pranav. This sending of message is a application, user application. आप और मैं हम सब यूजर है. हम आप जो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप भी एक कंप्यूटर यूजर हो गए. मैं जूम के थ्रू इंटरेक्शन कर रहा हूँ, मैं भी एक कंप्यूटर यूजर हो गया. तो ये हम सब यूजर मिलके जो मैसेज सेंड कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं व्हाट्सएप एप्लीकेशन पे. सो दिस इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. व्हाट्सएप को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप उसको मैसेज सेंड कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं. You are sending messages, receive messaging. This is called as a application, and that is why this application is called as a application software. Got it? Now look at the system software. What is mean by system software? You are applying something to the system. Sorry, you are whatever you are interacting, all interaction or commands is executed through the system is called as a system program or system application. For example, File Explorer. This File Explorer is provided by the operating system, one of the important services. तो File Explorer सर्विस आपको दिया है, तो File Explorer सर्विस दिया है, तो इसको सिस्टम सर्विस क्यों बोलते हैं? Because this File Explorer is used to open different files and folders. System is providing this software, and that is why it is called as a system software. File Explorer is provided by the operating system. It is provided by the system, and that is why it is called as a system software. For example, what is the use of this system software? What is the use of this File Explorer? To open a different documents, to open downloaded software, to open a different music, pictures, to access a music, to access a C drive, hard drives, to access a recovery D drives. Okay, accessing different icons and folders. For example, I am accessing the desktop app, desktop file folders. Okay, so system is providing me this different kind of access, and that is why it is called as a system software. Okay, so File Explorer is a system software. Again, we will go for the next example. For example, your date and time. Okay, I want to change the system date and time. So this date and time is provided by the system. I can change date according to my requirement. Okay, I will change the date here. For example, today's date is 7 July, right? आज का डेट क्या है? 7. 7. Very good. Very good. Time क्या है अभी? What is the current time here? 11:26. Very good answer. Very good answer. 11:26. Right? Now I want to change this time. Now I want to change this time. You can see the clock is changing. Is that clock changing? No. Yes, sir. Timing, whether time is changing or not, please reply. Yes, sir. Time changing. Very good. So 11:25 is there.
11:25. Okay, so it's a 11:25. Okay, I can change the date also. Here, what is the date now? 8 July 2021. That is Thursday. Again, I want to change it. It is a Wednesday, 7 July 2021. I can send, even I can change the AM and PM also. Okay, so this changing of date and times is provided by the system, and that is why this date and time setting is called as a system software. Operating system is giving me, operating system is providing all these facilities. Got it? Yes, sir. Okay, so this is the difference between system software and application software. Yes. Next question, please. Yes, क्या question है? Yes, please. I have a doubt. Please unmute. Ayush. Okay, okay. Okay, I have a doubt. Vansh. Okay. I will unmute all of you. Just raise your hand, please. Please raise your hand. सर हेलो सर हम सर जाते हैं तो One by one, please. सर One by one. बेसिक कंट्रोल पैनल में जाते हैं तो सब सेटिंग मिलती है हमको। नहीं, कंट्रोल पैनल में जाके आपको सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर का लिस्ट मिलता है। आपको मैंने बताया अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। कंट्रोल पैनल में मैंने आपको बताया कि फोटो भेजो सॉफ्टवेयर है। वन बाय वन प्लीज। Yes, one by one. Sir, I don't understand opening desktop icons. Opening desktop icons. Okay. Yes. देखिए, हाँ, तो यहाँ पे अगर आपको आइकॉन्स को ओपन करना है तो देखो मैंने कुछ वीडियोस भी सेंड किए हैं, रिकॉर्डिंग्स भी चल रहे हैं, जूम रिकॉर्डिंग भी आपको मिल रहा है, यूट्यूब का वीडियोस भी मैं सेंड कर रहा हूँ, उसको भी प्लीज सब बच्चे चेकआउट कीजिए, पेरेंट्स प्लीज चेकआउट। मैंने बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्डिंग सेंड किए हैं ग्रुप पे, यूट्यूब पे और जूम के, प्लीज चेकआउट, उसको भी चेकआउट कीजिए। ओके, तो यहाँ पे हम कर लेंगे। ओके, थैंक यू। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ राइट क्लिक करना है। जब भी आपको कोई डेस्कटॉप के ऑपरेशन चाहिए, तो अगर आपको डेस्कटॉप के ऑपरेशन चाहिए तो डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कीजिए। अगर आपको आइकॉन्स के ऑपरेशन चाहिए तो जस्ट राइट क्लिक ऑन दैट आइकॉन्स, माउस का राइट क्लिक ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करना है आपको। Got it? And Yes, sir. After using this shortcut menu, you just have to go in the open command. You have to click on open command by the left mouse button, and you can see these icons will be open directly. If I want to open some folders, I will right click on that. I will use a shortcut menus and I will use a open command at the same time. Okay, and you can see the all folders are open here. Got it? This is called as opening of icons and opening of files folder. Clear? Yes, sir. Okay. Next question, please. Hello, sir. Yes. Hello, sir. How to download the apps? Yes, downloading of apps. You have to simply go in Google Chrome and you will have Microsoft Play Store also. In the system, yes, you will have a Microsoft Play Store. You can go in search box and you can use your Microsoft Play Store here. Sir. Here is a Sir, I want to download WhatsApp. Here is a Microsoft Store. You can use the Microsoft Store to download all the application software. Here you can check out Microsoft Store. Here I can also download application through the Microsoft Store. Okay. And if you don't have this Microsoft Store, you can directly
go in these browser application also. You can use this browser application. First click on Microsoft Store, then open the command and you will get all the application through the Microsoft Store. Okay. And Yes, if you sir. don't have this facility, no problem. You can directly go in WhatsApp, download WhatsApp, just type the download WhatsApp application for PC, or if you have Windows 7, for Windows 7. Okay, if you have Windows 10 operating system, just type download WhatsApp for Windows 10. Okay, like this. Or if you cannot download it, or if you have some installation problem, then you can directly log in also. Okay, just type in address bar, you just have to type web.whatsapp.com. Okay, and here in mobile or cell phone you will get WhatsApp web option here. Okay, sir. Yes, you just have to type the web.whatsappweb.com, or in mobile you can directly choose the WhatsApp web option. Scan code, or after Hello, scanning sir. that you have some Mobile scanning पर codes. Yes, next question. Google. This is a not Google. This is a Google. Yes, please go ahead. Yes, sir. I am downloading that WhatsApp, but they are asking email password. Yes, you have to log in through the email also. Here you can. Sir, what is me? Sir, what is my password? You have to log in through the Gmail. जब भी आप Google Play Store यूज कर रहे हैं या Microsoft Store यूज कर रहे हैं, हमेशा वो आपको ईमेल पूछेगा. ईमेल से ही लॉगिन होगा वो. ये देखिए, यहाँ पे मैंने ईमेल लॉगिन किया है, तो मेरा Microsoft Store ओपन हो गया. यहाँ से अभी मैं कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता हूँ. Got it, everyone? Yes, sir. Yes, sir. What is basic operation? Basic operation of desktop. Yes. Yes, basic operation of desktop means desktop के ऊपर आप जो भी basic command यूज कर रहे हैं, execute कर रहे हैं या operation कर रहे हैं, that is called as a basic operation. Okay. For example, I want to change the display setting of desktop. So this is also basic operation of desktop. I can change all the display setting of the desktop. Okay. For example, I want to change the sound setting. I can change sound setting. If you can check out this master volume. I want to reduce this volume. I can reduce this volume. I want to increase this volume. I can increase this volumes. So this increasing or decreasing of value is also basic operation of desktop. For example, I want to change some brightness. I can change the brightness of the desktop. So this is also one kind of a basic operation of desktop. If I want to change the text size of the, look at this. I have changed all the display text size. Okay. Hello, sir. Hello, sir. All the display settings. The size of the text I have also changed. So these all are display settings. Basic display settings. Yes. Next question, please. Hello, sir. How to create a YouTube channel? देखिए, YouTube चैनल क्रिएट करना बहुत सिंपल है. वहाँ पे चैनल ऑप्शन आता है आपको, तो क्रिएट चैनल ईमेल को लॉगिन करना है. ठीक है, वो हमारा नॉट ए पार्ट ऑफ द टॉपिक, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ. डायरेक्ट क्रिएट चैनल ऑप्शन आता है आपको. इस तरह के डॉट ऑप्शन होते हैं, 3 डॉट ऑप्शन, और वहाँ पे 3 डॉट्स में आपको क्रिएट न्यू चैनल ऑप्शन आता है. Sir, how to uninstall any app? Please ask the question. Sir,
chapter first. Sir, And how to uninstall any app? how to Sir, install. how to uninstall? Sir, how to uninstall any app? Okay, if you want to uninstall the application, go in the control and here you will get a How to one. Hello, sir. Hello, sir. Computer. yes. So this is a default programs. Here you can delete the programs, uninstall the program, or sorry, program and features. This is the option where you can check out which application is installed or not. If I want to cross check whether it is properly installed or not, so this is a option, install program in control panel, where you can check proper application is installed or not. If I want to uninstall it, I can just right click and uninstall all the applications. Okay, this is the use of program and features. That is the installing and uninstalling programs. Okay. Again, next question was how to start the computer and shut down the computers. First, we will make a small size of all these display text. Again, we are going in display setting. जो टेक्स्ट का साइज हमने लार्ज किया था उसको थोड़ा हम डिक्रीज करते हैं. You can see we have changed the display setting. So this is also a basic operation of desktop. ठीक है. अगेन आप अगर इसका कोई बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो बेसिक ऑपरेशन ऑफ डेस्कटॉप. अगर उसका बैकग्राउंड या लॉक स्क्रीन का कोई स्क्रीन सेवर आप चेंज कर रहे हैं, ये देखिए मैं यहाँ पे स्क्रीन सेवर चेंज कर देता हूँ. ओके. ओके, तो इस तरह आप स्क्रीन सेवर अगर आप चेंज कर रहे हैं तो ये भी आपका एक बेसिक ऑपरेशन है. और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस तरह आपको लॉग इन और लॉग आउट करना है सिस्टम को. तो देखिए मैं जस्ट मिनट आपको बता देता हूँ. ये देखिए यहाँ पे आपको ये स्टार्ट बटन में आपको ऑप्शन होता है. यहाँ से आप ऑल एप्लीकेशन स्टार्ट भी कर सकते हैं. ये देखिए ऑल एप्लीकेशन, यहाँ से हर एक एप्लीकेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं. इनको रीअरेंज भी कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो रीअरेंज ऑल दिस. ओके, फ्रॉम दिस ऑप्शंस rearranging. Okay, you can change the size also. Okay, through the manage you can change the size. Here you can change the size of that icons. You can pin and unpin. Okay, so this is also basic operation of tilings, sizing, resizing. Okay, and the second question was how to shut down the PC. ये देखिए यहाँ पे पावर में आपको 3 ऑप्शन है. यहाँ पे शटडाउन पे क्लिक करने के बाद आपका सिस्टम शटडाउन हो जाएगा. अगर आपको सिस्टम शटडाउन करके रिस्टार्ट करना है तो देन यू हैव टू प्रेस है रिस्टार्ट ऑप्शन. ओके, एंड इफ यू वांट टू टेक सम ब्रेक, सो स्लीप मोड यू हैव टू यूज. ओके, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. हेलो सर. यस सर, हम सर हाउ टू मेक अ ऐप फोल्डर इन पीसी. सर हाउ टू मेक अ ऐप फोल्डर इन पीसी. हेलो सर. सर हम ना ये किसी को सर आई एम आस्किंग सर कर दे. सर हाउ टू मेक अ ऐप फोल्डर इन पीसी. Sir, how to make an app folder in PC? Okay, how to create folder. Sir, how to download apps? Sir, how to download apps? How to download apps? Yes, I will. Yes. Control panel download apps. Sir, Yes, I got the question. How to install the programs? Okay, so you have to go in Microsoft Store, and from here you have to install the programs.
sorry, you have to install all the application programs. ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से आप एप्लीकेशन यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट और एक ऑप्शन है आपको, डायरेक्टली गूगल क्रोम में जाके भी आप एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे व्हाट्सएप एप्लीकेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट व्हाट्सएप करूँगा और डाउनलोड कर दूंगा। ये देखिए WhatsApp Messenger. Here you can directly click on the WhatsApp Messenger and automatically from Google Play Store it will download all the WhatsApp application apps from the Google Play Store. Okay, so this way you can also download, but every time you have to log in through the Gmail. आपका जो Gmail अकाउंट है उसके थ्रू ही लॉग इन करना पड़ता है, तभी जाके वो इंस्टॉल होते हैं। ओके, यस। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये था इंस्टॉलेशन के बाद फोल्डर, हाउ टू क्रिएट फोल्डर्स। ओके, तो आपको डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करना है, यू हैव टू गो इन न्यू ऑप्शन एंड दिस इज आल्सो बेसिक ऑपरेशन ऑफ डेस्कटॉप एंड यू हैव टू क्लिक ऑन फोल्डर। हियर यू कैन क्रिएट अ न्यू फोल्डर्स एंड even you can right click, use shortcut menu and even you can rename the folder, for example demo or desktop operation. This is also basic desktop operation, to create folder, to rename folders. Okay, so we have given demo folder or desktop operation. So creating new folders, go in, just right click, use shortcut menu, use the new option and go in the folder. And even you can create any files from here, even any application file you can create from this shortcut menu. For example, I want Microsoft PowerPoint. Here you can check out, I have created Microsoft. So again, desktop operation, we have given name desktop operation. So you can create any type of file from the desktop. This is also a basic operation of desktop. Rename, if you want to rename the file, you can rename. If you want to delete the file, again you have to right click on the folder or files and you can delete the files. So deleting file folders is also a basic operation of desktop management. Okay, so we have deleted file folders. Yes, next question. Please raise your hand. Those who have queries, please raise your hand. Yes. Sir, I am Ayush Kasat. हम Yes. कंट्रोल पैनल बहुत कुछ सेटिंग कर सकते हैं, तो और Yes, yes, yes. कंट्रोल पैनल से आप पूरा सेटिंग चेंज कर सकते हैं। What is customizing the start menu? यहाँ से कंट्रोल पैनल से आप Windows चेंज। how to active Windows गूगल से भी मंगा सकते हैं लैपटॉप। सर, कस्टमिंग द स्टार्ट मेन्यू विंडोज। हेलो सर, मम्मी। हेलो सर, कस्टमाइजिंग द स्टार्ट एक्सीलेंट कस्टमाइजिंग how to make an app folder the start menu. Please ask one by one. Select हो गया क्या app folder? Customizing the start menu. Okay, start menu. Sir, how to active Windows? Yes, two question, how to activate Windows and startup menus. Okay. देखिए, विंडोज अगर आपको इंस्टॉल करना है तो यहाँ से आप उसको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप यहाँ से इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का स्पेशल फाइल लगता है, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ, आप अपडेट कर सकते हैं, यू कैन अपडेट द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से गूगल क्रोम से या कोई, इसके लिए आपको स्पेशल एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है परचेस करनी पड़ती है, वो आप कोई भी गूगल प्ले स्टोर से या कहीं से आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, यू कैन नॉट डाउनलोड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट बी डाउनलोड,
you have to purchase with laptop. When you purchase new laptop, new computer system, you have to purchase the operating system. Okay. So some you have to purchase antivirus. Some operating system cannot be downloaded. Yes, you can update the operating system from here. When you restart the system, okay, the all apps will be automatically updated by the Windows 10 operating system. Okay, or otherwise you can directly update the application from the Play Store also. This is a Microsoft Store. Microsoft Store. From here also you can download all types of application and update the application, but you cannot download operating system. Windows 10 operating system cannot be downloaded. Okay, here I can change, I can download or install application, all application software. Okay, and again if you want to update the operating system, you have to just right click on the power and just click on the restart button. Operating system will be automatically updated. Okay, and next question, what is the next question? Start application. Yes, start option is used to open your tiles and to open your all application. That is the use of start option. Three command is there. One is opening tiles, second is opening application, and third login and log out. That is shut down, restart, and sleep operation. These are the basic three operation of start button. शट डाउन करना, सिस्टम को रिस्टार्ट करना, स्लीपिंग मोड में लेके जाना, इससे कंप्यूटर सिस्टम शट डाउन होता है, स्टार्ट होता है, रिस्टार्ट होता है। और उसके बाद आपका ऑल एप्स है जहां से आप ऑल एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी माई कंप्यूटर्स, माइक्रोसॉफ्ट है, जितने इंस्टॉल एप्लीकेशन आपके पास है, सब एप्लीकेशन आप ऑल एप्स से ओपन कर सकते हैं। उसको प्रॉपरली टाइलिंग फॉर्म में भी, दिस इज कॉल्ड एज अ टाइलिंग फॉर्म, ये टाइलिंग फॉर्म में भी आप उसको ओपन कर सकते हैं। So this is the basic use of start button to open all the application in the form of styles and general form also. This is a general form and this is the tile form. Okay, so these are the two questions we have solved. Okay, next question please. Sir, what is customizing the start menu? Customizing start menu. Okay. App folder. Sir, how to create app folder? Hello sir. Hello sir. Hello sir. Hello sir. Hello sir. I have a question. Yes, yes, go ahead. How to delete recycle bin? How to delete recycle bin? Yes, yes. Okay. How to delete recycle bin? Okay, I got it. Okay, so three questions ask what is the customization of start menu. If you want to customize the start menu, you have to go in start and here directly from the just right click on the start button. And here is the option of customization of start menu. Okay, we have changed the icon tiles. This is a customization.